Hey guys, welcome back to my channel. We so far we have seen the basic queries of MySQL. In my previous video, I have uploaded three videos where I have explained all about MySQL from scratch. So now in this video, we will be sharing how to connect MySQL with the Python programming language. So I think we all have done MySQL queries on the MySQL command line prompt and the Python query on the PyCharm or Spider, right? So how to connect these two things in this video, we will be sharing that. So without further ado, let's start with the video. So first, right, for connecting Python with this MySQL, you need to have a platform. You can use either Spider or PyCharm. Okay, so there is no restriction that you have to use Spider or you have to use the PyCharm. So let's see what we have to do. The first thing, first you need to import PyMySQL. कुछ बच्चों के ये एरर्स भी आते हैं कि PyMySQL is not installed और ये एरर दे रहा है. तो here you can type, you can see in this section, you can type pip install PyMySQL. So my is already requirement satisfied, so I don't need to do that. But if your error is coming over here for this thing, then you have to write here pip install PyMySQL. Okay, when you enter it, this will get downloaded. Okay, so I'm not doing it. So next thing is you have to ट्राई करना है. अगर तो चल पड़ा तो ठीक है, अदरवाइज एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज मैसेज. ओके, अगर तो चल पड़ा तो ठीक है, तो वो वाली क्वेरीज चला देना जो हम लिखेंगे. अगर नहीं चला तो प्लीज हमें बता दे कि एरर क्या है. So it will give us the error कि कौन सा error आ रहा है. So I haven't. Okay. So let's just write something in try. So first of all क्या करना है, हमें connection बनाना है. So कौन will be written? Import PyMySQL, हम इसका short form दे देते हैं as PM. So that we can write here, you can use here PM as a short form. .8 connection उसका फंक्शन है जो कनेक्ट करता है MySQL के आपके टेबल्स को पाइथन के साथ. So आपको इसमें क्या देना है, host will be your local host, of course, every time. Next is your password will be what you have given. I have given 1 2 3 4 5. Anything you have written, you have to put that. User will be root because I have mentioned their root. And database will be whichever database you want to use. So I am having emp table, so I am using emp database. Okay, let's just check it out once. If yeah, ओके. सो नाउ अब हमने कनेक्शन तो बना लिया, हमने लोकल होस्ट उसको बता दिया कि मेरा होस्ट क्या है, लोकल होस्ट है, पासवर्ड ये है, रूट यूजर है और डेटाबेस ये, इसमें से टेबल उठाने हैं. अब हमने क्या किया, सिर्फ हमने कनेक्शन बनाया है. अब हमने उसको लाइक होता है ना, एक मार्कर हमें चाहिए बट जिसके साथ वो हम उसको रीड कर सकें. ये तो जस्ट एक कनेक्शन बना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कर्सर इज इक्वल टू कॉन डॉट कर्सर, एक फंक्शन है उसको हम कॉल करेंगे. ओके, इन द नेक्स्ट you need to execute means you need to tell which query you want to execute. Like I want to execute select star from student table. मेरा एक स्टूडेंट टेबल बना हुआ है, प्लीज ये क्वेरी को क्या कर दे, एग्जीक्यूट कर दे ये क्वेरी को.
ओके, सो ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुई। तो हमने क्या किया, डेटा को कर्सर में जो भी उसने फेच ऑल करना है, सारा डेटा फेच करना है, सारा डेटा फेच करके किस में डाल देना, डेटा में डाल देना है। अब हमने डेटा को प्रिंट करना है। डेटा को प्रिंट सेम वे वैसे ही करेंगे जैसे हम स्टार पैटर्न्स अगर आपने किए हुए हैं तो स्टार पैटर्न्स को जैसे आप प्रिंट करवाते हो, सेम वे लाइक दैट ओनली। I'm not just making you understand this, as I consider that you know this thing. You can just type it over here T because you want a tab between the datas, and just print here, print. Okay. So this is all about connecting a MySQL with Python. क्या किया फिर से समझते हैं. Let's go through all of these once by one. First, you have to import the PyMySQL. Why we are importing this? Just it's a tool to connect MySQL with the Python. So try करना है. अगर तो ये चल गया सारा कुछ, अगर इसमें कुछ भी एरर आ रहा है तो एरर मुझे बता दे कौन सा एरर है. अब कनेक्शन आया, कनेक्शन में हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया माई सीक्वल के साथ, जिसमें हमने होस्ट बता दिया कि मेरा लोकल होस्ट है, पासवर्ड ये है, यूजर ये है एंड डेटाबेस ये है. फिर उस कनेक्शन को, कनेक्शन एक सिर्फ हमारे पास एक पॉइंटर था, उसको हमने एक मार्कर के साथ मार्कर में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज कर्सर में डाल दिया. अब वो कर्सर एक एक करके सारा एग्जीक्यूट करेगा. ये वाली क्वेरी हमने इसमें ब्रैकेट में क्या पास की, क्या एग्जीक्यूट करना है हमें, हमने पूरी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है. और फिर डेटा में हमने क्या करना है, सारा जो भी कर्सर में था उसको फेच ऑल करके डेटा में डाल दे, सारा डेटा फेच करके डेटा में डाल दे. अब डेटा को एक एक बार हमने प्रिंट किया इन दिस फॉर्मेट. दिस इज द स्टार पैटर्न फॉर्मेट. सो लेट्स रन इट, लेट्स सी द आउटपुट. ओके, why it's saying connection? Okay, sorry, here it is connect only, no connection function is there, connect function is there. So you can see the data which we created in the previous video is shown here with a single tab, right? So this was all about how you can just connect MySQL with the Python. So if you liked my video, do subscribe it and like it, and also comment it down. It will be very good for me. Thank you so much. Meet you in the next video.